ध्यायामो धवलावगुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम्। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दमूर्तये नमः। ॐ आत्मारामाग्रगण्यायै नमः।
ॐ योगलीनान्दरात्मने नमः। ॐ अन्तर्मुखस्वभावायै नमः। ॐ तुर्यतुङ्गस्थलीजुषे नमः। ॐ प्रभामण्डलवीतायै नमः। ॐ दुरासदमहौजसे नमः। ॐ त्यक्तदिग्वस्तुकालादिसर्वावच्छेदराशये नमः। ॐ सजातीयविजातीयस्वीयभेदनिराकृते नमः। ॐ वाणीबुद्धिविमर्यायै नमः। ॐ शश्वदव्यक्तवर्त्मने नमः। ॐ नामरूपादिशून्यायै नमः। ॐ शून्यकल्पविभूतये नमः। ॐ षडैश्वर्यसमुद्रायै नमः। ॐ दूरीकृतषडूर्मये नमः। ॐ नित्यप्रभुत्तसंशुक्तनिर्मुक्तात्मप्रभामुचे नमः। ॐ कारुण्याकुलचित्तायै नमः। ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः। ॐ केरलक्ष्मावतीर्णायै नमः। ॐ मानुषस्त्रीवबुद्भृदे नमः। ॐ धर्मिष्ठसुगुणानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः। ॐ मातापितृचिराचीर्णपुण्यपौरफलात्मने नमः। ॐ निशब्दजननी गर्भनिर्गमाल्भुतकर्मणे नमः। ॐ काली श्रीकृष्णसङ्घाषकोमलश्यामलतुषे नमः। ॐ चिरनष्टपुनर्लब्धभार्गवक्षेत्रसम्पदे नमः। ॐ मृतप्रायभृगुक्षेत्रपुनरुत्थिततेजसे नमः। ॐ सौशील्यादिगुणाकृष्टजङ्गमस्थावरालये नमः। ॐ मनुष्यमृगपक्ष्यादिसर्वसंसेविदाङ्घ्रये नमः। ॐ नैसर्गिकदया तीर्थस्नानक्लिन्नान्दरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनदाहस्तसमर्पितनिजान्दसे नमः। ॐ अन्यवक्त्रप्रभुक्तानपूरितस्वीयकुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्तसर्वबोधात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षितस्वयं स्वान्दस्फुरत्कृष्णविभूतये नमः। ॐ अच्छिन्नमधुरोदारकृष्णलीलानुसन्धये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखालोकनित्ययोत्कण्डितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगादिदावदग्धान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोकसम्मूर्च्छा मुहुर्पतितवश्मने नमः। ॐ सारमेयादिविहितशुश्रूषालब्धबुद्धये नमः। ॐ प्रेमभक्तिबलाकृष्टप्रादुर्भावितशार्गिणे नमः। ॐ कृष्णालोकमहाह्लादध्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीचन्द्रगमञ्जीरवंशीशोभिस्वभूदृशे नमः। ॐ सार्वत्रिकऋषिकेशसान्नित्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरतन्मुखालोकविस्मेरोद्भुल्लदृष्टये नमः। ॐ तत्कान्तियमुनास्पर्शहृष्टरोमाङ्गयष्ठये नमः। ॐ अप्रदीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोफलाब्धये नमः। ॐ पाणिपद्मसुभद्वीणाशोभमानाम्बिकादृशे नमः। ॐ देवी सद्यस्थिरोधानतापव्यदितचेतसे नमः। ॐ दीनरोदननिर्घोष्यदीर्णदिक्कर्णवर्त्मने नमः। ॐ त्यक्तानपाननिद्रादिसर्वदैहिकधर्मणे नमः। ॐ कुररादिसमानीतपक्ष्यपोषितवर्ष्मणे नमः। ॐ वीणानिष्यन्दिसङ्गीतलालितश्रुतिनालये नमः। ॐ अपारपरमानन्दलहरीमग्नचेतसे नमः। ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः। ॐ शान्तरूपामृतच्छरी पारिणानिर्वृतात्मने नमः। ॐ शारदास्मारकाशेषस्वभावगुणसम्पते नमः। ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रेयशारदोभयमूर्तये नमः। ॐ तन्नाडकाभिनयननित्यरङ्गेदात्मने नमः। ॐ चान्द्रेयशारदाकेलिकल्लोलितसुताप्तये नमः। ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यरंहसे नमः। ॐ भूयप्रत्यवरुद्धार्षदिव्यसंस्कारराशये नमः। अप्राकृतात्भुतानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः।
ॐ ऐश्वर्यवीर्यकीर्तिश्री ज्ञानवैराग्यविश्मने नमः। ॐ उपात्तबालगोपालवेशभूषाविभूतये नमः। ॐ स्मेरस्निग्धकटाक्षायै नमः। ॐ स्वैरादिश्युतवेदये नमः। ॐ पिञ्जकुण्डलमञ्जीरवंशिका किङ्गिणीभृदे नमः। ॐ भक्तलोकाखिलाभीष्टपूरणप्रेरणेच्छवे नमः। ॐ पीठारूढमहादेवी भावभास्वरमूर्तये नमः। ॐ भूषणाम्बरवेशश्रीदीप्यमानाङ्गयष्ठये नमः। ॐ सुप्रसन्नमुखाम्भोजवराभयदपाणये नमः। ॐ किरीटरचनाकर्णपूरस्वर्णपडिभृदे नमः। ॐ जिह्वालीडमहारोगी बीभत्सव्रणदत्वचे नमः। ॐ त्वग्रोगध्वंसनिष्णादगौराङ्गापरमूर्तये नमः। ॐ स्तेयहिंसासुरापानाद्यशेषाधर्मविद्विषे नमः। ॐ त्यागवैराग्यमैत्र्यादिसर्वसद्वासनापुषे नमः। ॐ पादाश्रितमनोरूढदुसंस्काररहोमुषे नमः। ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तगुहाजुषे नमः। ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः। ॐ सुभाषितसुधामुच्चे नमः। ॐ अमृतानन्दमय्याख्यां जनकर्णपुरस्पृशे नमः। ॐ नृप्तदत्तविरक्तायै नमः। ॐ नम्रार्पितबुभुक्षवे नमः। ॐ उत्सृष्टभोगिसङ्गायै नमः। ॐ योगीसङ्गररंसवे नमः। ॐ अभिनन्दितदानादिशुभकर्माभिवृद्धये नमः। ॐ अभिवन्दितनिःशेषशिरजङ्गमसृष्टये नमः। ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तये नमः। ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविपिनवृत्तये नमः। ॐ भूयो गुरुकुलवासशिक्षणोत्सुकमेधसे नमः। ॐ अनेकनैष्टिकब्रह्मचारिनिर्मातृवेधसे नमः। ॐ शिष्यसङ्क्रामितस्वीयप्रोज्ज्वलद्ब्रह्मवर्चसे नमः। ॐ अन्देवासिजनाशेषचेष्टापादितदृष्टये नमः। ॐ मोहान्धकारसञ्चारिलोकानुग्राहिरोचिषे नमः। ॐ तमक्लिष्टमनोवृष्टस्वप्रकाशशुभाशिषे नमः। ॐ भक्तशुद्धान्तरङ्गस्थभद्रदीपशिखात्तुषे नमः। ॐ सप्रीतिभुक्तभक्तौघन्यर्पितस्नेहसर्पिषे नमः। ॐ शिष्यवर्यसभामध्यध्यानयोगविदिल्सवे नमः। ॐ शश्वलोकहिताचारमग्नदेहेन्द्रयासवे नमः। ॐ निजपुण्यप्रदानान्यपापादानचिकीर्षवे नमः। ॐ वरस्वर्यापनस्वीयनरकप्राप्तिलिप्सवे नमः। ॐ रथोत्सवच्चलत्कन्याकुमारीमर्त्यमूर्तये नमः। ॐ विमोहार्णवनिर्मग्नभृकुक्षेत्रोजिहीर्षवे नमः। ॐ पुनस्सन्धानिदद्वैपायनसत्कुलतन्दवे नमः। ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशाश्वतबन्धवे नमः। ॐ मृगक्षेत्रसमुन्मीलत्परदैवततेजसे नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते। ॐ
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। Om Amriteshwari Namaha. Good morning. In the past, whenever Amma went abroad to the US or to Europe, she would ask some of the swamis or the senior brahmacharis to conduct programs in various parts of India. Sometimes these seniors would take me along. On a few occasions, I accompanied a senior brahmachari to various parts of Tamil Nadu. My role was to sing. However, this brahmachari would not give me and the other singers the freedom to sing what we wanted. At first, I assumed it was because he knew what kind of songs the local devotees liked. But after a while, I noticed that the songs he objected to were mainly Krishna bhajans. He would refuse to let us sing even one of them. Once, during a public program, a member of the audience got up and publicly questioned this particular brahmachari about why our team was not singing any song to Lord Krishna. She pointed out that this program was being held in a temple where the main deity was Lord Krishna, and yet she could not understand why we could not even sing one song to him. I was glad that someone else questioned him, because whenever I used to ask him, he would dismiss me. When this lady asked him, the brahmachari remained silent. Later, other brahmacharis told me that he was a śivāya, which means he was a devotee of Lord Shiva. He viewed Vaishnavites, or he viewed devotion to Krishna, as suspect and might have harbored antagonistic sentiments towards them. This was a bit baffling to me, because he is Amma's shishya. He is a devotee of Amma. Anyone who has gone to Amritapuri or attended any one of Amma's programs would have heard Amma sing songs to Lord Krishna. She also sings songs to Shiva and all the other deities, seeing them all as different faces of the one God. This person has changed. He is a Swami now, and he has a more accommodating attitude, even though he remains devoted to Lord Shiva. While it's good to remain faithfully in one path, we must also be broad-minded enough to allow others to walk their own path. I had earlier thought that fundamentalists could be found only in certain faiths, those who claim that you can be saved only if you follow a certain path. But experience has taught me that there are chauvinists in all faiths. They might even substantiate the claim that their path is superior or nobler with proof from the scriptures. They don't see that there could be alternative interpretations to such scriptural declarations, or that theirs might be a misreading or misapprehension of the scriptures. If we read the Shiva Purana, for example, we will see that it extols devotion to Shiva over everything else. But if we look at the Vishnu
Purana, we will find that it declares worship of Vishnu to be the highest. These are not absolute claims, but statements that encourage devotees following those paths. I mention all this as a background to the next aphorism from the Narada Bhakti Sutras. Sage Narada is an evangelist rooting for the path of devotion, but his is not misinformed evangelism. Narada was a God-realized soul, and he knew the various paths that one could take to reach God. Yet, as he insists, the path of devotion is better for most humankind, not for all. Sage Narada says, Anyasmat saulabhyam bhaktav. The path of devotion is easier than all other paths. There are many paths to God, not just the path of devotion. There is a path of knowledge, otherwise called Jnana Yoga. There is a path of action or selfless service known as Karma Yoga. There is also Raja Yoga, which is the path of meditation. There are other paths too. Why does Narada say that Bhakti Yoga is easier than the others? The path of knowledge requires the seeker to discern constantly between the eternal and the ephemeral and to renounce all that is transient. For example, if we have a craving for ice cream, then we ought to be able to see through the craving and rise above our attractions and aversions. Can we do that all the time? Most of us cannot. Suppose someone tells us that we look like a dog. Would we be able to shrug it off and say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me? Most of us will not be able to do so. We might either retaliate with another insult or hold a grudge against that person. If we are feeling hungry, would we honestly be able to say, I'm not the body or the mind, but the soul, and rise above feelings of hunger? Jnana Yoga demands all of that. It demands that we remain centered in the self, unperturbed and unruffled. This is almost impossible for most human beings. Many say that they are on the path of self-inquiry because it sounds and feels more sophisticated than the path of devotion. They look down on bhakti the same way someone living in private property might turn their nose up at those living in public housing, or how those who drive cars might sneer at those who take public transport. Thinking that knowledge is superior to devotion is just another form of snobbery. Those who advocate the path of action or selfless service must realize that one of the cornerstones of Karma Yoga is not being affected by either success or failure. A true Karma Yogi will do what he or she needs to do, surrender the outcome to God, and remain unaffected by whatever happens. Suppose we spend a lot of time, effort, and money organizing a big event. Suppose no one attends the program despite all the publicity and marketing. Would we be upset, disillusioned, or disappointed? Most likely. It's only human to feel such emotions. But a Karma Yogi would not entertain such sentiments. How many people can truly be called Karma Yogis? Some might insist that their sole spiritual practice is meditation and that it's the best practice. At the heart of any meditation practice is chitta vritti nirodha, which means stilling the fluctuations of the mind. How easy is that? Most people who want to take up meditation forget that there are many steps to climb before they can even claim that they are meditating. Sage Patanjali has outlined the 8 steps that take us from outer discipline to inner stillness. The first is yama, which is ethical restraints, or ethical restraints like non-violence, speaking the truth all the time. The next is niyama, which means personal observances like purity. 3, asana, maintaining a very steady posture and not moving. 4, pranayama, which is the regulation of breath. 5, pratyahara, the withdrawal of sense organs from sense objects.
6, dharana, which is concentration or focusing the mind. The 7th step is dhyana or meditation, and the last step is samadhi or complete absorption in God. So meditation is the penultimate or the next to last step in this eightfold path. It's a very high state. Can we keep the mind perfectly still for even 10 seconds? Amma has instructed some devotees not to meditate or not to even try. I also know of people whom Amma has advised to meditate, but not for more than 5 minutes at a time. Why? Because Amma knows that in those cases, meditation can lead to mental derangement. Why is that? Because the system is not ready for meditation. In other words, all these paths, whether Jnana Yoga, Karma Yoga, or Raja Yoga, demand that we be of a certain elevated spiritual caliber. It's like applying for a job with specialist skills. Unless we have those necessary skills or skill set, we will not be able to do the job. But that's not the case with Bhakti Yoga or the path of devotion. Anyone can practice it because anyone can love. There is no other qualification that we need. And that's why Sage Narada says that Bhakti Yoga is easier compared with the other paths. He is not denying or dismissing the other paths. He's only saying that for most of us, Bhakti will be much easier because the terrain is smoother and the demands fewer. Amma compares devotion to a jackfruit tree. In a jackfruit tree, the large fruits often grow directly from the trunk or from low branches, sometimes almost at ground level, unlike most fruit trees where the fruit hangs high up. In other words, we can start enjoying the benefits of devotion from a very early stage, whereas in the other paths like jnana or karma, the seeker can enjoy the fruits only towards the end of the path. That's also why Narada says that bhakti is saulabhyam, the fruit of devotion is easily attained. Whether mantra, tantra or yantra, we need qualifications. We must know how to pronounce certain mantras. We must have the knowledge of how to do a puja properly. Even those with knowledge pray for forgiveness at the end of the chanting or the puja. Isn't that why we chant mantrahinam kriyahinam bhaktihinam maheshwari yat pujitam maya devi paripurnam tadastude? O Goddess, whatever worship I have offered to you, though it may be deficient in mantra, mantrahinam, deficient in ritual, kriyahinam, or deficient in devotion, bhaktihinam, may that worship nevertheless become complete through your grace. But to call out to God, we don't need any knowledge or qualification. In fact, it's not possible to call out to God wrongly. Amma says we don't need to have studied music in order to call out to God. All we need to do is to call out from the heart. All we need is love. In the next sutra, Sage Narada says, Pramanantarasya anapekshatvad swayam pramanatvad. Love requires no external proof, for it is self-evident. Do we need someone to tell us that we are in love? We will know it if we are in love. Suppose a toddler calls out to his mom. Instead of mummy, let's say he says me. Will the mother ignore the child? No. She knows that the baby boy or girl is calling out to her, and she'll pick up the child immediately. This is also the beauty of bhakti. We can call out to God in the way that we know best, from our heart. God understands our limitations and will respond in a way that is suitable or appropriate. Some of us might think that we don't have love or devotion or bhakti, but that's not true. We all have love. We're all born with love. Right now, that love might be invested in other things, in our partner or spouse or children, in our job or in gadgets, for example. All we need to do is to reinvest that capital in God. We just need to reimagine the love that is innate to us being directed Godward. Narada then says, Shanti Rupat
Paramananda Rupacha. True devotion is of the nature of peace, Shanti, and supreme bliss, Paramananda. Does this mean that all devotees are peaceful and blissful? We all know that that's not true. The sutra is not a reflection of the path. It alludes to the end, not the means. Devotion brings Shanti and Ananda, peace and bliss, or at least true devotion does. The challenge is in gaining true devotion. To gain it, we have to struggle. It's not easy. But the struggle is not to gain something, but to lose whatever is obstructing the natural flow of love. The flow is usually obstructed by negativities such as egoism, fear, and hatred. Once the obstructions are removed, we will not only be peaceful and blissful, we will also be able to transmit peace and joy to other people. Once the Buddha encountered Angulimala, the dreaded killer who signed off each murder he did by chopping off the fingers of his victims and then stringing them to his garland of other fingers. The Buddha did not flinch when he came face to face with this cruel man, but stood his ground calmly. The love he exuded was so powerful that it disarmed Angulimala, who from that moment onwards abjured violence and embraced peace, becoming in due course a worthy disciple. It's not only human beings who are moved by a person with pure devotion. All beings in nature feel it. Many years ago, when Ram, the elephant, was first arrived in the ashram, he used to be brought near Amma's room and she would feed him there after darshan. Once after Amma had fed him and returned to her room, Ram wanted more attention from Amma. He broke free and went on a rampage. All the people around him scattered and ran for life. I was one of them. But Ram did not want freedom. He wanted Amma. He ran to Amma's room and tried to go up the staircase. Unfortunately, he's a bit too fat, and so he got stuck. He became frustrated and he started to cry out in anguish. Amma had to come down from her room and lovingly console Ram. Then a few people pushed him from the top of the staircase and a few people pulled his tail down to get him down from the staircase because he was stuck there. Once, when a boy was about 9 years old, he had a vision of the Virgin Mary. The boy asked her, "What will become of me?" In response, the Virgin Mary held out 2 crowns, one white and the other red, and asked the boy if he was willing to accept either of these crowns. Accepting the white one meant he would have to lead a pure life. Accepting the red one meant that he would have to become a martyr, someone who sacrificed his life for other people. The young boy said that he would accept both. He later joined a Christian monastery where he was ordained a priest. During World War II, he provided shelter to refugees. He was arrested by the Gestapo, the secret police of Nazi Germany, and taken to the infamous Auschwitz concentration camp. The guards there beat him up, but that did not stop him from helping other people. Once, one of the inmates of the camp escaped. The deputy camp commander was determined to teach a stern lesson to the other inmates in the camp to make sure that no one would even think of trying to escape. He ordered his guards to pick 10 men to be starved to death in an underground bunker. When one of the men was picked, he broke down and cried, saying, "My wife, my children." When this priest heard this, he volunteered to take the place of the man who had been picked. The priest continued to lead the 9 other men in prayer in the underground bunker. Every time the guards checked on them, they found that the priest was either standing or kneeling in the middle of the cell. After the group had been deprived of food and water for 2 weeks,
All of them died except for the priest and 3 of them. The guards were impatient to empty the bunker, and they decided to give the survivors lethal injections. When they came to the priest, he calmly offered them his left arm. This man was Saint Maximilian Kolbe. The saint's outer life was marked by adversity and suffering, but his inner peace was not disturbed by the outer suffering. Devotion is an inner experience. In true devotion, there is no thought of oneself. Even the instinct for self-preservation disappears. When God becomes everything for us, we find peace and joy in sacrificing everything, even our own life, for others. Thank you. If someone could turn off the lights. Please close your eyes. Still the body and become aware of your own physical presence. Try and relax body and mind. To help us relax more, let us chant Om 3 times, and as we do so, let's feel the vibrations of the mantra permeating the whole body. Take a deep breath. To help us become more centered, let us pay attention to our breathing. Let's try not to let even one breath, inhalation or exhalation, escape our notice. Breathe with awareness. There is no need to try and control your breathing in any way. Just ride each wave of your breath and follow the entire cycle of your breathing from the point you breathe in to when the breath turns around and you breathe out. Become aware of the pauses between each inhalation and exhalation.
Now as we inhale, let us silently intone the sound Ma, and let us silently intone the sound Om with our exhalation. Breathe in Ma and breathe out Om. Let's do this for some time. Slowly feel the sounds, Ma and Om, fading away from your breath completely, taking you to a state of inner peace and silence. Let's now spend a few moments praying for the peace and happiness of all beings in creation. Amma often reminds us that when we pray for others, our hearts become more expansive and purer. Visualize white flowers of peace falling from the skies to the earth below. Imagine these white flowers of peace falling into the oceans, infusing the oceans with peace. Imagine these flowers falling into lakes and rivers. Next, let's visualize the white flowers of peace falling on mountains. And on forests. And on birds and animals.
Finally, let's visualize the white flowers of peace falling on our own heads, filling us with immeasurable calmness, contentment, and serenity, a deep peace that passeth understanding. Imagine the vibrations of peace radiating out from our heart center to the whole universe. Let us conclude this meditation by chanting the peace prayer, Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu, which means may all beings in creation be peaceful and happy, 9 times. As we chant this mantra, you may visualize the white flowers of peace falling from the skies to the earth below. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.
ആരതിയൊഴിയും അവനിതൻ അവതാരമാകത്വമേ. നിലയ്ക്കാത്ത അലിവിന്റെ അലകടലേ, നീയല്ലയോ അങ്ങേ സത്യമാം സദ്ഗുരു. ആരതിയൊഴിയും അവനിതൻ അവതാരമാകത്വമേ. നിലയ്ക്കാത്ത അലിവിന്റെ അലകടലേ, നീയല്ലയോ അങ്ങേ സത്യമാം സദ്ഗുരു. ജീവിതജ്വാലാതാപത്തിലൊഴുകിടും ജീവനിലേക്കു നീ പനിനീര് തൂകവേ. ജീവിതജ്വാലാതാപത്തിലൊഴുകിടും ജീവനിലേക്കു നീ പനിനീര് തൂകവേ. സ്നേഹത്തിലായിരം അശരണരായിടും മർമ്മമക്കൾ അലിയുന്നു അമ്മേ. സ്നേഹത്തിലായിരം അശരണരായിടും മർമ്മമക്കൾ. ആയിരം ദീപങ്ങളാരതിയൊഴിയും അവനിതൻ അവതാരമാതൃത്വമേ. നിലയ്ക്കാത്ത അലിവിന്റെ അലകടലേ, നീയല്ലയോ അങ്ങേ സത്യമാം സദ്ഗുരു. മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മോഹാന്ധകാരത്തിൽ മാനസം ഉണരുമ്പോൾ ഉൽക്കാമ്പു തേങ്ങുമ്പോൾ. മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മോഹാന്ധകാരത്തിൽ മാനസം ഉണരുമ്പോൾ ഉൾക്കാമ്പു തേങ്ങുമ്പോൾ. മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മോഹാന്ധകാരത്തിൽ മാനസം ഉണരുമ്പോൾ ഉൽക്കാമ്പു തേങ്ങുമ്പോൾ. മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മോഹാന്ധകാരത്തിൽ മാനസം ഉണരുമ്പോൾ ഉൾക്കാമ്പു തേങ്ങുമ്പോൾ. കരളിൽ കനിവിൻ ഹിമഗണമാരിപ്പോൾ. കരളിൽ കനിവിൻ ഹിമഗണമാരിപ്പോൾ. കരളിൽ കനിവിൻ ഹിമഗണമാരിപ്പോൾ. കനിവിൻ ഹിമഗണമാരിപ്പോൾ. കരയല്ലേ മുത്തേ നിനക്ക് ഞാനില്ലേ. കരയല്ലേ മുത്തേ നിനക്ക് ഞാനില്ലേ. ആയിരം ദീപങ്ങളാരതിയൊഴിയും അവനിതൻ അവതാരമാതൃത്വമേ. നിലയ്ക്കാത്ത അലിവിന്റെ അലകടലേ, നീയല്ലയോ അങ്ങേ സത്യമാം സദ്ഗുരു. തോരാത്ത കണ്ണിന്റെ തീരാത്ത ദാഹമായി തേങ്ങുന്ന കരളിന്നു കൈവല്യമൂർത്തിയായി. 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 സർവചരാചര ജീവനും അമ്മയായി സത്യമായി വാഴുന്ന മാതാമൃതേശ്വരി. സർവചരാചര ജീവനും അമ്മയായി സത്യമായി വാഴുന്ന മാതാമൃതേശ്വരി. ആയിരം ദീപങ്ങളാരതിയൊഴിയും അവനിതൻ അവതാരമാതൃത്വമേ. നിലയ്ക്കാത്ത അലിവിന്റെ അലകടലേ, നീയല്ലയോ അങ്ങേ സത്യമാം സദ്ഗുരു. ആപാദപദ്മത്തിൽ അർച്ചന പുഷ്പമായി അർപ്പണം ചെയ്യാൻ അടിയന്റെ ജന്മവും. ആപാദപദ്മത്തിൽ
अर्चना पुष्पमाय अर्पणं ചെയ്യുകയാനടിയന്റെ ജന്മവും ആപാദപത്മത്തിൽ അർച്ചന പുഷ്പമായി അർപ്പണം ചെയ്യുകയാനടിയന്റെ ജന്മവും ആപാദപത്മത്തിൽ അർച്ചന പുഷ്പമായി അർപ്പണം ചെയ്യുകയാനടിയന്റെ ജന്മവും പുഞ്ചിരി തൂകിനിന്മാരോട് പുൽകവേ തൂകിനിന്മാരോട് പുൽകവേ പുഞ്ചിരി തൂകിനിന്മാരോട് പുൽകവേ പുഞ്ചിരി തൂകിനിന്മാരോട് പുൽകവേ പുണ്യമായി തീർക്കണേ എന്റെ ജന്മം പുണ്യമായി തീർക്കണേ എന്റെ ജന്മം ആയിരം ദീപങ്ങളാരതിയൊഴിയും അവനിതവതാരമാതൃത്വമേ വിലകാത്താലിന്റെ അരകടലേ നീയല്ലയോ അമ്മേ സത്യമാം സദ്ഗുരു 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 दुःखहर्ता तू शांति प्रदाता विलोकी दुःखहर्ता तू शांति प्रदाता अनाथ के नाथ तू जय जय गणनाथा अनाथ के नाथ जय जय गणनाथा अनाथ के नाथ जय जय गणनाथा जय गणेश देवा गणेश श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा लिखे नाम तेरा प्रभु रखे जो पहला कदम लिखे नाम तेरा प्रभु रखे जो पहला कदम लिखे नाम तेरा प्रभु जो पहला कदम लिखे नाम तेरा प्रभु लिखे जो पहला कदम लक्ष्य को वो पावे देवा दूर हो उसकी अड़चन लक्ष्य को वो पावे देवा दूर हो उसकी अड़चन दूर हो उसकी अड़चन जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश देवा श्री गणेश श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्रद्धा से जो करे तेरा नित्य सुमिरन 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 अहंकार मिट जावे देवा पावे भक्ति मुक्ति कदन अहंकार मिट जावे देवा पावे भक्ति मुक्ति कदन पावे भक्ति मुक्ति कदन जय गणेश जय
अर्पित ये तन मन। तव चरणों में देवा अर्पित ये तन मन। तव चरणों में देवा अर्पित ये तन मन। तेरी कृपा से नाता टूटे माया के बंधन। तेरी कृपा से नाता टूटे माया के बंधन। टूटे माया के बंधन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। तीनों के दुख हरता तू शांति प्रदाता। 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 अनाथ के नाथ तू जय जय गणनाथा। 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 जय जय गणनाथा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। नंदना नंदनंदना नंदनंदना सुंदर वदना। नंदनंदना 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 सुंदर वदना। नंदनंदना 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 सुंदर वदना। नंदनंदना 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 वंदित चरणा। नंदनंदना 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 वंदित चरणा। नंदनंदना 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 वंदित चरणा। वरवदनं वन्दे भगवन् नन्दकुमारं वन्दे। वरवदनं वन्दे नटवर नन्दकुमारं वन्दे। नन्दजनयनं वन्दे मधुमय मङ्गलधामं वन्दे। पङ्कजनयनं वन्दे मधुमय मङ्गलधामं वन्दे। नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना। नंदनंदना 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 सुंदर वदना। नन्दनन्दना 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 वन्दित चरणा। नंदनंदना 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 वंदित चरणा। मञ्जुलचरितं वन्दे भवभय भञ्जननिपुणं वन्दे। मञ्जुलचरितं वन्दे भवभय भञ्जननिपुणं वन्दे।
गोकुलविहारं वन्दे जनवन जनशीलं वन्दे नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 वन्दितचरणा गोकुलबालं वन्दे गिरिधर गोपकुमारं वन्दे गोकुलबालं वन्दे गिरिधर गोपकुमारं वन्दे विलोलं वन्दे रजजन जीवनसारं वन्दे वेणुविलोलं वन्दे व्रजजन जीवनसारं वन्दे नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 वन्दितचरणा कालियदमनं वन्दे हरिबल वचनचरणं वन्दे कालियदमनं वन्दे कलिमलकोचरचरणं वन्दे रूपं वन्दे कविकुल मानसचोरं वन्दे कोमलरूपं वन्दे कविकुल मनसचोरं वन्दे नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 वन्दितचरणा नारदविनुतं वन्दे गुरुमम नीलशरीरं वन्दे नारदविनुतं वन्दे निरुपमहीनशरीरं वन्दे वेदविहारं वन्दे यदुकुल रजकुमारं वन्दे वेदविहारं वन्दे यदुकुल रजकुमारं वन्दे नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 सुन्दरवदना नन्दनन्दना 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 वन्दितचरणा नन्दनन्दना 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 वन्दितचरणा नन्दनन्दना वन्दितचरणा नन्दनन्दना वन्दितचरणा नन्दनन्दना वन्दितचरणा नन्दनन्दना वन्दितचरणा வில்வத்தால் அச்சித்தோ விஸ்வேஷா காத்திடுவார் அள்ளதரும் துய நீங்க அமிர்தேஷா காத்திடுவார் வில்வத்தால் அர்ச்சித்தோ விஸ்வேஷா காத்திடுவாய் அள்ளதரும் துய நீங்க அமிர்தேஷா காத்திடுவாய் வில்வத்தால் அச்சித்தோ விஸ்வேஷா காத்திடுவார் அள்ளதரும் துய நீங்க அமிர்தேஷா காத்திடுவார் வில்வத்தால் அர்ச்சித்தோ விஸ்வேஷா காத்திடுவாய் அள்ளதரும் துய நீங்க அமிர்தேஷா காத்திடுவாய் சிவ சிவ சங்கர கௌரி மனோகர शंकर गौरी मनोहर शिव शिव शंकर गौरी मनोहर शिव शिव शंकर गौरी मनोहर வாழ்வென்றும் பிணி தீர்த்து வைதீஷா காத்திடுவார் வாழ்வென்றும் பிணி தீர்த்து
வைதீஷா காத்திடுவாய். வாழ்வாங்கு வாழ வைத்து வையகத்தை காத்திடுவாய். வாழ்வாங்கு வாழ வைத்து வையகத்தை காத்திடுவாய். வையகத்தை காத்திடுவாய். சிவ சிவ சங்கர கௌரி மனோகர. 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 சிவனை நான் வணங்குகிறேன், சிவபதத்தை தந்திடுவாய். சிவனை நான் வணங்குகிறேன், சிவபதத்தை தந்திடுவாய். அரண் உன்னை வணங்குகிறேன், அன்பு நெஞ்சை காத்திடுவாய். அரண் உன்னை வணங்குகிறேன், அன்பு நெஞ்சை காத்திடுவாய். அன்பு நெஞ்சை காத்திடுவாய். சிவ சிவ சங்கர கௌரி மனோகர. 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 சரணம் சரணம் சர்வேஷா. 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 சிவ சிவ சங்கர கௌரி மனோகர. சிவ சங்கர கௌரி மனோகர. சிவ 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 சிவ சங்கர கௌரி மனோகர. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. ஓங்கார பொரு தன்னை உரித்து வங்கியே ஆங்காரம் நீக்கிய மக்கருள் புரிவாயே. ஓங்கார பொருள் தன்னை உரித்தவங்கியே ஆங்காரம் நீக்கிய மக்கருள் புரிவாயே. வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா. வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா. வானோரே அசுரருடன் போர்க்களத்திலே சேனாதிபதியாக காட்டு நின்றாயே. வானோரே அசுரருடன் போர்க்களத்திலே சேனாதிபதியாக காத்து நின்றாயே. காமாதி பகைவருடன் போரிடும் என்னை வீராமல் காத்தருள்வாய் கந்தசாமி. காமாதி பகைவருடன் போரிடும் என்னை வீழாமல் காத்தருளாய் கந்தசாமியே. கந்தசாமி
சொந்த சாமியே எங்கள் சொந்த சாமியே கந்த சாமியே எங்கள் சொந்த சாமியே கந்த சாமியே எங்கள் சொந்த சாமியே வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் முருகாவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் முருகாவா ஓடி ஓடி சேர்த்தனெல்லாம் உதவவில்லையே கூடி இங்கே வந்தவரும் கூட இல்லையே ஓடி ஓடி சேர்த்ததெல்லாம் உதவவில்லையே கூடி வந்தவரும் கூட இல்லையே பாடி உந்தன் பதம் பணிந்தும் பயம் இல்லையே தேடி உன்னே சரணந்தென்றும் குறையும் இல்லையே பாடியுடன் பதமணிந்தும் பயமும் இல்லையே தேடியுமே சரணடைந்தும் குறையும் இல்லையே குறையும் இல்லையே ஒரு பயம் இல்லையே குறையும் இல்லையே ஒரு பயமும் இல்லையே குறையும் இல்லையே ஒரு பயம் இல்லையே குறையும் இல்லையே ஒரு பயமும் இல்லையே வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் மருகாவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகாவா வேண்டுகிறோம் காத்திடவே மால் முருகாவா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 வேல் जय जगदम्बे दुर्गे माँ जय मनमोहिनी भद्रे माँ जय जगदम्बे दुर्गे माँ जय मनमोहिनी भद्रे माँ जय जगदम्बे दुर्गे माँ मोहिनी भद्रे जय जगदम्बे दुर्गे माँ जय मनमोहिनी भद्रे जन्म विनाशिनी जय जय माँ जगदोधारिणी श्रीकरी माँ जन्म विनाशिनी जय जय माँ जगदोधारिणी श्रीकरी माँ जय 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 माँ
विनाशिनी लक्ष्मी मां विश्वविमोहिनी पार्वती मां विश्वविनाशिनी लक्ष्मी मां विश्वविमोहिनी पार्वती मां विद्यादायिनी सरस्वती मां विमल सुहासिनी जय जय मां विद्यादायिनी सरस्वती मां विमल सुहासिनी जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां कामितदायिनी देवी मां कामविनाशिनी काली मां कामितदायिनी देवी मां कामविनाशिनी काली मां कालस्वरूपिणी भैरवी मां करुणामयी जगदम्बे मां कालस्वरूपिणी भैरवी मां करुणामयी जगदम्बे मां जय 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 जगजननी वन्दे अमृतानन्दमयी मंगलहारति मार्गभवानी अमृतानन्दमयी माता शुचरिते अमृतानंद
वर्षिणी माता अमृतानंदमयी प्रेम भक्ति संदायिनी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी शमदमदायिनी वरलयदायिनी अमृतानंदमयी सततं मम हृदि वसतां देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी पतितोद्धार निरंतर हृदये अमृतानंदमयी परमहंस पद निलये देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी जननी जनि मरण निवारिणी अमृतानंदमयी श्रित जन परिपालिनी जयता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी सुरजन पूजित जय जगदम्बा अमृतानंदमयी सरल समाधि सुधन्यी देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी ओम जय जय जगज्जननी वन्दे अमृतानंदमयी मंगल आरती माता भवानी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी की जय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। Om Amriteshwarye Namaha. The society wishes to thank Arun and family and Amma's children for sponsoring today's puja.
The society also wishes to thank Lakshmi Akka for today's Annadanam. Happy birthday, Lakshmi Akka. Ma Om White Flowers of Peace meditation will be conducted by Mādhavāmṛta ji this evening at 4 p.m. Mother's Kitchen vegetable cutting will be on 2nd of May, Saturday, from 4:30 to 5:30 p.m. Packing and distribution will be on 3rd May, Sunday, from 11 a.m. to 1 p.m. of the Satsang. Kartika Puja will be observed on 17th May, which coincides with Sunday Satsang. We humbly invite devotees to come forward and offer their loving support by sponsoring our upcoming Sunday Satsang and contributing to the Annadanam program. To maintain the sanctity and serenity of a Sunday Satsang, we kindly request all devotees to be seated by 8:30 a.m. for the prayers. Refrain from entering or exiting the hall during meditation session. Observe silence immediately after the Satsang. Thank you for your cooperation and understanding. Om Amriteshwariyai Namaha.